तीन पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ. आइदर में भी हो सकता वो ए बी के अलॉन्ग स्टार्ट किया विथ V1, और मे बी वो ए सी के अलॉन्ग स्टार्ट किया विथ V2, और मे बी मैन इज हैज स्टार्टेड अलॉन्ग ए डी विथ वेलोसिटी V3. सो जो भी तीनों में से जो भी पाथ के अलॉन्ग वो स्टार्ट करेगा, विल ही क्रॉस द रिवर फॉर मूविंग अलॉन्ग दैट लाइन ओनली, और विल गेट drifted or will get deflected from the path. That means as because there is no flow of water is available, so that means man will not get deflected. That's what I've written. Velocity of man in still water will be the resultant velocity. Okay, will be the resultant velocity of the man. That is, man will not get deflected from its path. ठीक है? Are you getting me or not? तो इसका मतलब है कि जिस पाथ में वो स्टार्ट करेगा वही उसका एब्सोल्यूट पाथ लेंथ होगा. सो वॉट एवर विद द वेलोसिटी with which the man will try to cross the river when river is having still water in it, that in that case along the desired direction of motion the man will be able to continue the motion along that path. ठीक है? सो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन उस पाथ ऑपोजिट बैंक में जहाँ जाएगा वहीं पहुँचेगा वो. बट इसी का अगर केस 2 डिस्कस किया जाए, इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इज VW, मान लो एक वेलोसिटी ऑफ वाटर VW इज अवेलेबल. अब क्या होगा? अब अगर मान लो मैन इज ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर एंड in the river there is a flow of water available, then how will we be able to see the starting path and resultant path, how they will be different होगा क्या? हाँ या ना? मतलब जैसे अगर मैं ये एक पाथ बनाऊं, एज्यूम करूं A to B, A and B are just opposite points, right? B is just opposite to A and vice versa. Suppose in this case the man starts moving along this direction. ये है velocity of man. Okay, velocity of man as starting velocity. It is the starting velocity with respect to flowing water. अब मान लो इसमें वाटर का फ्लो है, तो ये जो डायरेक्शन में मैन स्टार्ट किया, वॉट एवर बी द डायरेक्शन, सो विल ही बी एबल टू मैनेज द मोशन अलोंग द स्टार्टिंग डायरेक्शन? क्या ये पर्टिकुलर स्टार्टिंग डायरेक्शन में कंटिन्यू जाएगा? हाउ वी विल मार्क दिस वेलोसिटी? Velocity of man as starting velocity with respect to flowing water. So we usually mark this velocity representing it as VMW. Okay, VMW means it is velocity of man with respect to water. As because water is in a state of motion, it is velocity of water is countable, so that's why this starting direction will be the relative velocity. Okay, now depending on the velocity of the water, it may possible that if the velocity of the water can push the man to certain distance like this only, okay, then it is quite possible that the resultant path will be still to the left of AB. That means if we draw it like this, according to this VMW, it is indicating that as if man is starting from A, targeting let this point P. Are you getting it or not? But due to flow of water, man is reaching the opposite bank somewhere Q. That will be this as a general discussion. This is a general discussion that drifting can be even maybe to the right side of AB also, depending on that what is the magnitude of velocity of water. Okay,
So it is a general discussion. It may be that if I have considered that velocity of water has been that magnitude, because of which that man has been pushed rightward by some distance, so that the resultant path is PQ. So how to consider the, I mean, what is the role of this diagram? Here AP will be the path along which man will start, man will start swimming in presence of river current, means in presence of flow of water, in presence of river current, okay, with velocity vmw, right? So AP will be that path along which, what I've written, the man will start swimming in presence of river current with velocity vmw, right? And then AQ will be the path of resultant displacement, the path of resultant motion after getting a drift, by the flowing water. Are you getting me or not? So actually man will cross, this implies that though the man is supposed to be starting along AP, but actually the man is crossing the river along AQ. Okay. Implies that this AQ is, this is the path along which man will cross the river, Are you getting me or not? So that means there'll be no such case where man will be able to continue the motion along the starting direction in presence of river current. Whatever be the direction along which, I can show you more examples like this. Suppose if I draw another case, okay, this is the flow of water is flowing this way. If I consider A to B, suppose one path along which the man is starting, wherever the man will start along that direction, we only use VMW, right? So direction of flow of water suggests VW. So man will get drifted along the resultant path. So this will be the path along which man will cross the river. हाँ, तो बात मैंने क्या कहा समझ में आया कि जो भी डायरेक्शन में मैन स्टार्ट करेगा, आइदर इट वाज द पाथ ऑफ एपी, बट दैट इज नॉट द पाथ अलोंग विच इट इज एक्चुअली क्रॉसिंग द रिवर, राइट? सो इट विल क्रॉस अलोंग विच पाथ, AQ. सिमिलरली देखो दूसरा एक और डायग्राम मैंने ड्रॉ किया. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, वाटर विल पुश दैट मैन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. एज अ रिजल्ट क्या होगा? Instead of traveling along AB, this will be the resultant path. और यहाँ AB क्या होगा? स्टार्टिंग डायरेक्शन, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? So that means on all such cases, whenever it will be an argument based on a situation where it will be said that man is crossing the river, that means you need to confirm that no, in such cases man is going to continue that path along which he will start. Either it is a man in presence of running water, or boat is trying to cross a river in presence of running water. Okay, same thing. Are you getting me or not? It is the velocity in still water. Okay. See, if it is quite obvious, if you are having a running capacity in still medium, when there is no
wind motion is countable, right? Are you getting it or not? Suppose you are having capacity to run through, for example, 10 meter per second in still medium. Still medium means when there is no countable velocity of air is measurable, right? Suddenly, suppose you are getting an opportunity to run at it at your maximum potential, even in presence of wind motion. So, will you automatically generate or will change your capacity? Suppose suddenly you are in such situation where you have to run against the wind motion. So, will it be as because you have to run against the wind motion, then what will happen? You will pray to God and God will immediately give you the blessings that your capacity will automatically increase from 10 to 20. Is it possible? No. That means whatever is your capacity in steel medium, you can apply that one as your potential, your capacity even in running medium. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? लॉजिक सबको क्लियर हो रहा कि नहीं? जो मेरा एक स्टील मीडियम में दौड़ने का कैपेसिटी होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ विंड मोशन ऑफ द मीडियम, मेरा कैपेसिटी विंड मोशन से मेरा अल्टीमेट फाइनल वेलोसिटी इंपैक्ट होगा, लेकिन क्या मेरा कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट रनिंग वो चेंज होगा क्या? नो, कैपेसिटी विल रिमेन सेम. So that's why in all such relative velocity question, like mostly wherever the man is to be either swimming or boat is to be crossing a river in presence of running river is concerned, वहाँ एक यूजफुल कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वो है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्विमिंग कैपेसिटी के बारे में कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर is the velocity with which man tries to cross a running river under different conditions. Are you getting me or not? Under different conditions. Velocity of man in still water is the velocity with which the man tries to cross a running river under different condition. Different condition का मतलब है कि जैसे कभी तुमको बोल देगा कि man wants to cross a river in minimum time taken. This is one condition. कभी दे देगा कि man is to cross the river for minimum displacement. So condition differ हो गया, but दोनों ही condition में man is trying to cross the river when river current is available. ठीक है, तो दोनों ही केस में जो मैन का स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन वाइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी वैल्यू वो यूज करेगा दैट विल बी द वेलोसिटी व्हाट इट इज अवेलेबल इन स्टिल वाटर. आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो यानी कि पूरा इस तरह के सिचुएशन में तुमको याद रखना है कि मोस्टली क्वेश्चन में हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं वहाँ तो वेलोसिटी ऑफ VMW देख रहे हैं एज अ डायग्राम, एज अ कॉन्सेप्ट. तो वो VMW एक्चुअली क्या होता है उसी का इन्फॉर्मेशन मान लो क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन ट्रिकी तरीके से दिया होता है. डायरेक्ट वो VMW का वैल्यू ना दे के वो दे देता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर. तो जो स्टिल वाटर में किसी मैन का वेलोसिटी होगा वो उसका कैपेसिटी होगा. सो ऑब्वियसली द मैन कैन यूटिलाइज हिज कैपेसिटी ओनली इवन इन रनिंग वाटर. तो इसीलिए रनिंग वाटर का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगा दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर. इज दैट क्लियर? तो यानी कि हम लिख सकते हैं VMW जो सिचुएशंस में जो सिचुएशन मैंने डायग्राम दिया दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to running water, velocity of man with respect to running water is equal to Vm, that is velocity of man in still water. Got my point? Logic clear हुआ? स्टिल वाटर में जो मैन का अपना वेलोसिटी होगा वो उसी को यूज करेगा एज अ VMW इन रनिंग वाटर केसेस. इज इट क्लियर? Anybody having any doubt?